Hello, good evening to everyone. This is 8th mathematics class. So I think there are still few people are joining. So we'll wait for 1 minute. Till then, I will see that whether I can share the screen. So can you see my screen now? क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? That's great. So I'm scribbling something with the red pen. So can you see that? So I'm scribbling on the book with the red pen, some random stuff. So can you see on the screen? No, right? Okay. Okay, I think I have to change the stuff. Okay. So now can you see my scribbling? Yes, sure. I will speak it louder. Actually, mic was a bit far away. Now, hopefully, this voice may be clear for you, and you can see my scribbling too. Okay. So आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, and you can see the screen also, right? Both are okay. Then we will move ahead. Okay. First of all, Happy New Year to everyone. I think this is the start of New Year, and I know everyone is busy with New Year resolutions. So we will start with this new topic, statistics. I think we have just started about statistics, and I think last time I have given overview on the use of this topic, like how statistics is so important in our daily life, specifically from the vaccinations. Specifically, I will tell you the example of vaccination, which is like currently pandemic is going on for the COVID-19, and there are different trials going on for vaccines. So one of the vaccine is Pfizer. Uh, I will write down the name here. Pfizer. I know it starts with P, but it's pronounced as Pfizer. Then Moderna. Then another Indian vaccine is there, Covaxin. So all these vaccines are approved, and those vaccines. So my main intention to describe about these vaccines are these all vaccines are approved on the basis of statistics. So we have so what they are doing, it's maybe more
advanced, more modern statistics. But we have to learn what are the fundamentals, what are the data, what are the points, what is meant by average, and how we should compare between different groups. So all this stuff is considered while approving any vaccine. So statistics is very important branch in day-to-day life. So let's see uh, what we can learn in the this fundamental stuff. So last time we have learned that what is meant by arithmetic mean. I will not go over it again. If you have any question, you can ask me. And we have seen that what is meant by the branch called statistics, right? So it's nothing but collecting information regarding certain problem, like we have the problem of COVID-19. So that is the problem, right? Analyzing the information. So we have to collect the information, then analyze whether it's that vaccine is working against that COVID-19 or not. Then drawing the conclusion, right? So this is a separate branch. So this is the one problem which I described. So can you tell me any problem whichever you can think of where we can use this statistics, specifically like problem where we can use statistics? So for statistics, there are different problems, but specifically we need data also, right? Without data, it's very difficult to interpret. So whatever the problem you can think of, you can write in the chat box. So you have to see that how data कैसे मिल सकता है किसी भी प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके रिलेटेड डेटा कैसे मिल सकता है. सो क्या आप ऐसे कोई प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं चैट बॉक्स में? एनी प्रॉब्लम, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ. आप आपने जो भी आजू बाजू में देखा है या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं विद रेफरेंस टू स्टैटिस्टिक्स, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. और एक मैं प्रॉब्लम बताना चाहूंगा जैसे पोल्यूशन, राइट? पोल्यूशन इज वेरी बिग प्रॉब्लम. वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. So what statistics can play a role here? यहाँ statistics इससे रोल प्ले कर सकता है कि किसी भी जगह में पोल्यूशन है तो what they do, they measure the data, specifically sulfur dioxide और NOx, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो ऐसे जो भी चीज़ें हैं तो उसका डेटा वो लोग मेजर करते हैं फॉर ईच सिटी और ईच लोकेशन. देन दे विल कम टू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, किस एरिया में ये चीज़ें ज़्यादा है. सो दे कैन ट्राई टू एलिविएट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो कैसे कम हो उसके लिए ट्राई कर सकते हैं. सो एक अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, सो स्टैटिस्टिक्स कैन यूज देयर. सो आई विल, that's a good example, but how statistics play a role there? It's uh, not calculating the marks. So suppose we can run some quiz, right? So quiz का कुछ भी डेटा होगा. क्विज के अनुसार किसी को आउट ऑफ 50 किसी को 10 मिले हैं, किसी को 20 मिले हैं. सो वी विल कम टू नो दैट विच स्टूडेंट इज लैगिंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. किसी भी स्टूडेंट को कौन सा भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो हमें वो पता चलेगा फ्रॉम दैट स्टैटिस्टिक्स. एंड वी कैन मतलब हमें पता है कि अभी इतने टॉपिक्स हैं तो स्टैटिस्टिक्स से हमें ये पता चलेगा कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, तो वी कैन try to pinpoint that problem and we can help students to, yeah, we can revise the uh, stuff, right? So इस प्रकार से यहाँ statistics use होता है. So there are some more stuff like अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो they will prompt you and there are some apps, so they use these statistical tools to understand you better. They will provide you video, they will provide you animation. So such type of things can be done with the help of statistics for the betterment of the students. Then another, population of country, yeah, that is a good way to understand the data. And not only population, then from population, where is the population is more residing. So there is one term called population density. So that also we can use for the statistical purpose. Then we can uh, allocate the resources according to the population. So हमें पता है कि यहाँ population ज़्यादा है, तो हम लोग को वहाँ पानी या और क्या रहता है, रेशंस लाइक ग्रोसरी सप्लाई, वो वहाँ हमें ज़्यादा देना पड़ता है, राइट? सो वी कैन मैनेज. सो स्टैटिस्टिक्स प्लेज रोल इन सच टाइप ऑफ resource allocations, right? So there is another, counting the stars. Yeah, counting the stars also another very good example, but वो problems नहीं है. Counting the stars is not a problem, right? It's situation. So वो काउंट करने के लिए किसी भी स्टार्स का, जैसे हमें दिख रहा है वो कितना दूरी पर है, उसका ब्राइटनेस कितना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज हो सकता है. ओके, so yeah, I think it's there are good examples where we can almost there are there are many examples or many problems where we can use this statistics. So let's see. So arithmetic mean. So the arithmetic mean is like average. So we have seen that average of 60, 50, 54, 46 and 50 is 52. The average is called arithmetic mean or simply mean. इसको mean या average कहा जाता है. To find the mean of numerical data, we add all scores. तो हम क्या करते हैं, जो भी डेटा है वो पूरा ऐड करते हैं and divide them sum of the total number of scores. So हम उसके टोटल नंबर कितने हैं उस स्कोर से डिवाइड करते हैं. सो मतलब क्या है इसका, कि अभी देखिए ये हमने न्यूमेरिकल डेटा है तो ऐड कर दिया, जैसे 60 प्लस 50 प्लस 54 जो भी आया, और ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, राइट? तो हम ये 5 नंबर से डिवाइड करेंगे 5. ओके, सो इस प्रकार से हमें मीन पता चल जाता है. सो लेट्स सी वन एक्सरसाइज प्रॉब्लम हियर टू अंडरस्टैंड द अरिथमेटिक मीन इन बेटर वे. तो यहाँ देखिए क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 37 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 इन द टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स. मतलब उस टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 10, आर गिवन बिलो. फाइंड द मीन ऑफ द डेटा. तो यहाँ क्या है कि 37 स्टूडेंट्स हैं, सो 37 उन्होंने डायरेक्टली हमें नंबर दे दिया है. सो वी डू नॉट हैव टू वर्क ऑन द डिनोमिनेटर, राइट? सो हमें डिनोमिनेटर तो पता चल गया कि नीचे हमें 37 यूज करना है, और ऊपर क्या है, इनका एडिशन, सबका एडिशन करना है. सो 2 प्लस 4 प्लस 4. तो ये इस प्रकार से हम लोग ऐड करके अगर न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर में 37 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका मीन मिल जाएगा. तो देर आर डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट दिस डेटा. तो उन्होंने एक वे बताया. सो इफ वी गो ऑन एडिंग द स्कोर्स वन आफ्टर द अदर, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो हमें बहुत टाइम लग जाएगा. So we know that 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 into 5 is equal to 35. This simplifies the operation of addition. Okay, when a number
when a number is to be added to itself, so let us use the method and add the numbers by classifying them. So हम क्या करेंगे, इनको क्लासीफाई करते हैं. So हमें पता है कि दो नंबर कितनी बार आया है. So मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखना है कि जैसे देखिए पहले हम दो नंबर लेंगे, राइट. यहाँ 0 और 1 किधर है नहीं, राइट. अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद 0 and 1 आल्सो. सो उस क्लास में किसी को 0 या 1 मिला नहीं है. सो अभी देखेंगे दो, दो कितनी बार आता है इसमें, पूरी एक बार. तो हम लोग टैली मार्क्स 1 लिख के, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1, सो 1 into 2 is 2. ओके. सो वैसे थ्री, थ्री कितनी बार आया है, थ्री, थ्री भी एक ही बार आया है, राइट. तो हम लोग ने वो भी लिख दिया. अभी फोर देखेंगे कितनी बार आता है, फोर, फोर, और ये फोर, ये है फोर. सो फोर 5 टाइम आया, राइट. सो हम क्या करेंगे, अभी फोर को यहाँ 5 टाइम्स लिख दिए, फोर को 5 टाइम्स लिख दिए. और हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फोर इज इक्वल टू टोटल लिख देंगे इस टेबल, इस कॉलम में. सो ये क्या होता है, ये टैली मार्क्स इज लाइक टू हमें काउंट करने के लिए. मतलब अगर हम डेटा देख रहे हैं, जैसे अभी ऊपर देखा तो एक, दो, तीन, चार, और ये क्रॉस लाइन होती है, इसे हम 5 बना देते हैं, सो दैट इट इज इजी फॉर काउंटिंग आफ्टर द. सो फर्स्ट हम लोग टैली मार्क करते हैं, जितना भी हम लोग डेटा गिनते जाते हैं तो इसमें, और इसके बाद हम लोग कितने टोटल हुए वो यहाँ लिख देते हैं. और फिर ये है हो गया फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार आया है उस डेटा में. जैसे दो कितनी बार आया है, एक बार. सो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार आया है, उसका रिपीटेशन कितनी बार हुआ है. सो दो कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार. थ्री कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार. फोर कितनी बार रिपीट हुआ है, फाइव, 5 टाइम्स. सो मतलब 5 स्टूडेंट. फ्रीक्वेंसी माने क्या है यहाँ, हाउ मेनी टाइम्स दैट डेटा हैज बीन रिपीटेड. और हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है. तो हम क्या करेंगे, उनको 5 into 4 करेंगे तो हमें वो एडिशन मिल जाएगा. इस प्रकार से हर चीज का हमने, हर मार्क्स का हमने इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी और उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और इनका एडिशन कर दिया, 259. सो हमें पता है कि टोटल 37 है. अगर हम लोग इनको भी गिनेंगे और इनका टोटल यहाँ लिख देंगे, अगर ये 37 नहीं आता है, then we know that we are missing some points because we have counted that already that it is 37. So इस प्रकार से हमें ये मीन मिल जाता है. So मीन में क्या होगा, addition of all the numbers divided by total number of people, or no, total number of students are there. Okay, so what is the mean, 7. Okay, so mean is 7. So इससे क्या पता चलता है कि जो भी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एवरेजली 7 मार्क्स मिले हैं. ओके, आउट ऑफ 10. मतलब एवरेज माने किसी को 10 मिले हैं, किसी को 2 मिले हैं, तो उनका एवरेज जो भी है 7 है. पूरे क्लास का एवरेज 7 है. सो मोस्ट ऑफ द लोग इस 7 के आसपास है, इसका मतलब ये होता है. सो अगर हमें किसी का भी मतलब इस मीन से क्या पता चलता है बेसिकली, कि हमारा डेटा जो है वो किस पॉइंट या किस मार्क्स के आसपास ज्यादा है, राइट. सो इसमें हमें पता चला कि इसका मीन 7 है, तो पूरे क्लास का मिल के एवरेज 7 है. So this helps in understanding the people, and this frequency table helps us in understanding that how many students are there in two, like one. So only one student is there. Then यहाँ 4 में 5 लोग हैं, तो 4
जो भी मिले हैं स्टूडेंट्स 5 लोग हैं तो हम लोग उनको उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, राइट? दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ students, but there may be another examples where people are carrying out trials, right, on vaccines. So these people we can study more, right, for our research. So उनको 5 ही मार्क्स क्यों मिले हैं, ऐसा देख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. So statistics is really important tool for this type of thing. So there is question like not understood that 7. So 7 is a mean, right? So जैसे बहुत सारे मार्क्स है लाइक 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो एवरेज जो भी क्लास का एवरेज है वो अराउंड 7 है. ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि 7 के आसपास लोगों को सेम मार्क्स मिले, मतलब जो भी क्लास के लोग हैं, जैसे कुछ लोगों को 10 मिला है, कुछ लोगों को 8 9 और कुछ लोगों को कम भी मिला है, लेकिन एवरेज, मतलब अगर एवरेज पकड़ा जाए तो 7 है, ऐसा उसका मीनिंग है. ओके, सो क्लास का एवरेज मतलब उन स्टूडेंट्स का एवरेज, हर एक स्टूडेंट को अराउंड 7 मिले हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट? सो दैट वैल्यू मीन्स जैसे कुछ स्टूडेंट को 2 मिले हैं, राइट? कुछ स्टूडेंट को 3 4 5 इस प्रकार के मार्क्स मिले हैं. 7 क्या रिप्रेजेंट करता है कि हर एक स्टूडेंट को, जो भी 37 स्टूडेंट्स हैं, हर एक को 7 मार्क्स मिले हैं, राइट? तो हर एक को अगर 7 दे देंगे, सो दैट रिप्रेजेंट्स दिस डेटा, राइट? सो 7 ये 37 स्टूडेंट्स का मीन है. ओके, सो सपोज ये क्लास ए है, राइट? ये क्लास ए है और हम लोग दूसरा एक क्लास लेंगे, क्लास बी, जहाँ सेम टेस्ट किया और उनका एवरेज कुछ 50 40 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज आ गया 8, right? So what we can infer from this data, that this class is doing better, right, in this exam specifically. So we may have to work on these students who are lagging behind. So ये टेस्ट के मार्क्स ही ना पकड़ के हम लोग यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे इनका न्यूट्रिशंस कितना है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. सो इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द डेटा, राइट? एंड वी कैन infer the, or we can interpret the result, and we can analyze this data through this mean. So mean is one statistical parameters. There are different parameters we will come to know, uh, uh, will come to know afterwards. Okay, so yeah, this is arithmetic mean. So there are different type of stuff we will see. So there are some observation. Let's see. Prepare a table above and follow the steps to calculate the mean of data. So they have given the procedures which we have just now explained, but let's go by step by step. Write the score in the first column, like we have seen the 2 3 4. We can write in ascending or descending order, it's up to you. Okay, here we have written in the ascending order. Write the tally marks in the next column. So tally marks हमने next column में लिख दिया. Count the tally marks of the score and write the frequency of the score. तो हमने इसको काउंट करके इस टेबल इस कॉलम में लिख दिया. इन द लास्ट कॉलम राइट द प्रोडक्ट. इन दोनों का प्रोडक्ट हमने लास्ट कॉलम में लिख दिया और उनका एडिशन कर दिया. एंड I think you all may be familiar with this Greek symbol sigma. So this is very important in the sigma symbol. इनको सिग्मा कहते हैं, बट हम इसे बहुत बार समेशन के लिए यूज करते हैं और वेरी पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल or to use this
symbol. You should not use the symbol anywhere. Okay, sigma represents the summation. तो यहाँ समेशन सिग्मा इज समेशन यानी एडिशन, सिग्मा का मतलब होता है। तो एफ आई इंटू एक्स आई का जितना भी सम एडिशन है वो पूरा ऐड कर देंगे और उनका टोटल लिख देंगे। ओके, सो डिवाइड बाय एन, एन इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इस प्रकार से हमें मीन मिलता है। सो मीन इज वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल पैरामीटर विच वी कैन यूज फॉर एनालाइजिंग द डेटा। Okay, I think this is another good example. Okay, so यहाँ let's see production of soybean per acre in quintal obtained by 30 farmers। तो यहाँ क्या देखिए, ये भी वेरी गुड स्टैटिस्टिक्स है कि हम लोग फार्मर्स जितने भी हैं उनके यहाँ कितनी लैंड है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी कोई भी धान्य है तो वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम इससे पता कर सकते हैं। और then we can help farmers, so whoever is growing less, right? So we can help them in terms of methods, what methods they are employing, or what seeds they are using, how much water or how much light uh, they are providing. So we can help them in different way. So so statistics is really useful in such type of problems also. So you can take anything in life. Statistics is really important. Okay, so यहाँ क्या है कि there are 30 farmers in one of the village Rajapur. So they have given the soybean. Soybean is they are producing per acre. Okay, how much they are producing per acre? So there are 30 farmers and they have given the data. So first thing, we know that we have to put it in the table like 4. First is 4. There are 3. We know 3. So number of farmers is 3, and we can uh, do the uh, multiplication here. 3 into 4. Similarly, there is 5. So why they have not taken 4.5? Because there is no 4.5 in this data. Okay, so 4, 5.5, 6, 6.5, 7.5, 8, 9. So 9 is the maximum. Okay, and only 3 farmers could do it. So anyway, so we could get it FIXI is 195, and if we divide it by 30, then we will get the 6.5. So for the exam point of view, you have to be very careful while counting these numbers, right? So generally what happens, if we take this 4, we miss this 3 or 4, means counting. So you have to be very careful. This number sometimes doesn't show up. If we add this, then there may not be 30. So you have to be very careful while counting these numbers. I know it's very easy job, but sometimes we miss. So for exam point of view, you have to be very careful. So again, okay, after this we will get the mean. So mean production is around 6.5 uh, 6.5 per acre. Okay, 6.5 quintal per acre. So this is the mean. So generally those group of farmers in that village, right? So we can compare between two villages. That one village Rajapur and another village is maybe some another village. We can any term any name, and if that village has the mean less or uh, better than this, like 7.5, right? Then they are producing more. Uh, they are producing more soybean. Then we can take what we can take the help from those farmers, that what exactly they are doing, वो लोग क्या कर रहे हैं. So we can use those methodology
to help help the farmers in Rajapur. So this way, statistics can be help means will be is really helpful for the growing of the crop production. Okay, so आपको कुछ भी doubts, कुछ भी queries है, you can ask me now. If not, then we will go ahead. So I will suggest you to go through this practice set 11.1, and if you have any doubts or any questions, you can ask me in next lecture. Okay, any problem that any data is not matching or anything. Like last time you guys had suggested me to go through some 2 or 3 problems. So similarly, if you have any questions in this exercise, let me know. Okay, so let's go to the next thing. So let's learn. So last year we have studied simple bar graph. I think in last year's syllabus, you might have studied the simple bar graph or joint bar graph. Now we will study some more bar graphs. तो हम इस बार more bar graphs देखेंगे. Uh, so यहाँ है subdivided bar graph diagram. As in joint bar graph, we can compare the information in data by subdivided bar graph also. Here, information of 2 or more constituents is shown by parts as a single bar. We will see the steps drawing the subdivided bar graph. Okay, so यहाँ देखते हैं क्या है. So एक यहाँ उन्होंने क्या दिया है. So whenever you are working for a statistics problem, so you have to see that what data is there. So let's see. So यहाँ क्या है? Town, right? So there are Ithalpur, Dhanodi, and Karmabad. So these 3 towns are there. So there are male laborers and there are female laborers. So we know that how many laborers are there in particular town, right? And they have divided according to the gender. So what is the value here? 120, we know. And here it's 160. So we know the total laborers, right? So let's see now how to prepare this given data and write in the uh, divided bar graphs, right? So यहाँ क्या है? Draw the x-axis and y-axis on graph paper. I think you guys may be using these graph papers, right? So we have to draw this x and y-axis. So we have to start 0, right? 0, and on y we can see that it's numbers, right? Then there are 3 towns, right? Etha, Dhanwad, and I do not remember the name. Let me see the name. Ithalpur, Dhanodi, and Karmabad. Ithalpur, Dhanodi, and Karmabad. So इसमें first step क्या है? First draw x-axis and y-axis. So we know this is y-axis and this is the x-axis. So ये first draw करने हैं, और we have to be very careful while showing the this arrow. So we know that x-axis continues on both the sides. So we have to show these arrows, and y-axis also continues on both the sides. So we have shown that arrows. So wherever it meets, we term it as a 0, right? And we can write down the number. We can equally divide like 40, 80, 120, 160. So there on graph, there are some lines like for 1 centimeter, right? So for each centimeter, we can decide the
the number, right? We can go for 50, 40, 20 according to the data. So we know that our whole this graph paper is not so big. Then we have to see the maximum number. Like in this problem, we know that maximum number is around 3 300, right? So we have to divide according to that, so that we can शो, हम ये ग्राफ यहाँ शो कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हम लोग यहाँ 10 से अगर शुरुआत कर देंगे 1 सेंटीमीटर को 10, तो ये 300 तो इस ग्राफ के बाहर ही चला जाएगा। सो वी कांट शो ऑल दिस ग्राफ। सो हमारा मेन मकसद है या मेन एम है, मेन इंटेंशन है कि ये ग्राफ मतलब रिप्रेजेंट करना है। सो व्हाई वी चूज दिस रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज विजुअल एड्स, अगर हमको कुछ भी विजुअली दिखाया जाए तो हमें वो जल्दी ग्रास्प होता है, और प्लस इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट डेटा इन ग्राफिकल फॉर्मेट। सो इसलिए हम लोग ये ग्राफ यूज करते हैं। सो देखिए, राइट द नेम्स ऑफ टाउन्स ऑन एक्स एक्सिस। सो हम यहाँ एक्स एक्सिस पे नाम लिखेंगे। सॉरी। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने पूरा नाम, मतलब ITH DHA, धानोड़ी, कर्माबाद, ये इथालपुर, तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इथालपुर। सो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। सो देर आर वेज वी कैन राइट इट डाउन नाउ। शो द नंबर ऑफ लेबरर्स ऑन वाई एक्सिस। नंबर ऑफ लेबरर्स हम इस एक्सिस में लिखेंगे, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 लेबर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट टू चूज, राइट। सो हम क्या चूज करते हैं वो यहाँ इम्पोर्टेंट है ग्राफ पेपर्स में। सो ये कभी कभी 40, कभी 20 ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू अस, राइट। बट we have to see that it should fit into the this graph paper. Total number of laborers in the town Italpur is 300. Show it by single bar. So हमें पता है कि यहाँ 300 टोटल हम लोग यहाँ लेबरर्स हैं, तो यहाँ 300 का हमने एक सिंगल बार बना लिया। सॉरी, शो द नंबर ऑफ मेल लेबरर्स बाय पार्ट ऑफ द बार बाय सम मार्क। तो हमें पता है कि यहाँ 180 क्या है, मेल है, मेल लेबरर्स है, तो हमने वो शेडेड कर दिया, राइट। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट सिटी, हमने 120 का एक ग्राफ बनाया, और उसमें देखा कि 80 लोग मेल हैं, तो एक वहाँ लाइन खींच के ये शेडेड कर दिया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंट द फीमेल लेबर, शोइंग द पार्ट्स अनदर इंक, ओके, अनदर मार्क। सिमिलरली ड्रॉ द सबडिवाइडेड बार्स फॉर द टाउन्स धानोडी एंड कर्माबाद। तो इस प्रकार से हम 3 डिफरेंट टाउन्स के लिए ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ बना लिए। इसमें ये देख सकते हैं कि फीमेल और मेल हमने ऐसा रिप्रेजेंट, अभी है ये तो हमने कर दिया, बट इफ someone wants to read this data, so they should know which are the male part, which are the female part. So we have to show this uh, legends. So this is called legends, okay, generally in uh, legends. So these are the legends. So इस प्रकार से ये यूज होता है फॉर कैरिंग आउट द or representing the data. So I will ask you all one question. How many people uses Excel sheet? क्या आप Excel sheet यूज करते हो, Microsoft Excel? That's good. So आपने कभी इस प्रकार के ग्राफ्स वहां ड्रॉ किए हैं क्या?
या कुछ लोगों ने ड्रॉ किए हैं। तो किसी ने यहाँ एक्सेल शीट में इस प्रकार के ग्राफ ड्रॉ किए हैं या नहीं? So if you guys have not seen such type of graphs, um, better you can go to the Excel and use this data. It's not difficult. And if you have any question, you can ask me in next lecture also. So you can take this data, uh, town, male laborers, and you can show this representation in graphical representation in subdivided graph style. Okay, and try to get same scale on y-axis, and you can draw this in Excel sheet very easily, right? This is just for practice because in future, not now. For exam purpose, you may have to work on this graphical paper, graph paper, but in future, maybe whenever you join any industry or any job, that time you may use this type of graphs, right, to draw the graphs from the data. So there are different ways. Excel is we can say that it's like primary thing we can learn. So there are different another stuffs like for they use like different softwares are there just only for representing the data in graphical format. So there are different softwares which you may use in future. Now you have to work on this graphical uh, data sheet, right? So generally what happens like if you know the data, and sometimes if you see in this type of format, you know that okay, there are we what we can draw the conclusion that in every city female laborers are less, right? Male laborers are more. uh, so this type of things like we can conclude very easily from this type of graphical representation. Yes, sure. So, Vedant, surely, I will explain you very short about this divided bar graph. So, what we have done here specifically, so we have taken two axes, this is a y, right? Then we divided this y like per centimeter, we have taken 40, 80. So each centimeter represents the 40 laborers. Then we made like for Italpur, there are totally 300 laborers. So we made this bar, right? We made this bar of 300 total laborers. And then we marked 180 for the male laborers, and then we shaded with one color. Similarly, for another town like Dhanodi, sorry, for Dhanodi we made one bar here, which is like 120 total 120, and then we marked for the male, and then we shaded those part. Similarly for this Karmabad also, last town. So we came up with this mid divided bar graph, and then we have to represent this legends that what does it means, which color represents what. So here we know that white color represents this female blank, and then this blue color represents male. So this way, and then we have shown the scale also, that 1 centimeter is 40 laborer on y-axis. Scale is on y-axis. On x-axis, there is no scale required because these are the towns.
So these are the things which we can show. Yes, Vedant, this is the thing we have learned, and I think I can. And another part is like which we learned today is like mean. Uh, so in mean, what we learned is today that suppose these are the data, this is the data, then how we represent in this chart, okay, and so here we have taken the number like 4 5 which is a production of soybean per acre, and then we marked like how many are there, like 4, then how many are there, then we counted those numbers like from tally marks, and then we have multiplied this 4 into 3. So for each number like 4 5 5.5, we have counted those numbers in this data, and we have come up with the product, or we have come up with this multiplication, and at the end we have added all these numbers, and then we divided this addition divided by number of farmers, right, and we get the mean. Okay, so we have studied only this part and the subdivided bar graph. That's what we have studied today. And anyway, you can go back and take the lectures also. I think it is recorded. So you can take a lecture and you can see this. And we have covered the mean and the subdivided bar graph. Okay, and yeah, one thing I mentioned here, if you guys can practice on Excel sheet if you are using, okay, if you are not using, that's fine, not a problem, because afterwards if you join any job or anything in future, you will work on this. Okay, so there is again practice set 11.2 is there here. So we can quickly go through this. Okay, this exercise. Okay, so okay, so state the type of graph. I know this is subdivided bar graph. Okay, now what I need is the answer. How much is the saving of Vaishali in month of April? Okay, so can you write in the chat box? So one is representing the data, another is uh, interpreting the graphical representation, right? We have to analyze. So now, what will you do? We will go to the Vaishali's bar graph, right? So how much saving she has in the month of April? Right. So approximately it's 600. Okay, that's correct. How much is the total saving of Saroj in the months of March and April? Saroj. So how much total Saroj has? It's around 800. That's correct. How much more is total saving of Savita than total saving of Mega? Savita and Mega. So how much saving, total saving, right, of Savita than total saving of Mega? So what we have to do, we have to see how much saving Mega has, then how much saving Savita has. So from this, we know that it should be around 500. Can you check? So how much more is the total saving of Savita than the total saving of Mega? It's around 500.
right? So as if we compare, this is around 500, this is around 1000, so it's 500. Whose saving in the month of April is the least? So किसका सेविंग सबसे कम है अप्रैल मंथ के लिए? तो अप्रैल मंथ क्या शो करता है? ब्लू, राइट? सो ब्लू में सबसे छोटा बार किसका है? मेगा. So we can directly write it here, mega. Okay. So yeah, these are the ways we have to analyze the graphical representation. Okay, so you have to be very careful while uh, seeing this line and where it is projecting on this y-axis, whether it is 800 or 780. So you have to be careful while taking the value. Okay. So yeah, this is the exercise. If you have any question, you can means you can go through this exercise, and if you have any question, you can ask me in next lecture. Okay. So let's learn. So there is another graph, percentage bar graph. I think this is another way to represent the data, and it takes time, and I don't think that I can cover it in next 8 minutes. So I think better we will stop here, and we will see you in the next lecture. And till then, if you have any question, you can ask me right now, or you can ask me next lecture also. Okay. Bye bye. Have a great evening ahead, and take care, and wish you a happy new year again. Yes. Bye bye. Take care. See you in next lecture.